बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद आलम और आप देख रहे हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स हब। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 10th क्लास फिजिक्स की किताब से लिया गया है, जो कि केपी बोर्ड्स का कोर्स है। आज हम बात करेंगे दो चार्जेस के बारे में जो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। जी हाँ, आज का सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, अ 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। एक 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर रखा गया है। इन पार्ट ए वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 5 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड इन पार्ट बी what is the force on the 10 microcoulomb charge, in part C what is the field strength 20 centimeter from the 10 microcoulomb point charge। 10 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। आइए इस सवाल को एक फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 5 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज, let this is charge 1 denoted by Q1, and the second charge which is 10 microcoulomb is denoted by Q2। दोनों के दरमियान फासला 20 सेंटीमीटर है। 10 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसको हमने F12 से जाहिर किया है। F12 का मतलब फोर्स on 1 due to 2। सिमिलरली Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाता है उसको हमने F21 से डिनोट किया है। F21 का मतलब है फोर्स on 2 ड्यू टू चार्ज 1। Q2 से 20 सेंटीमीटर के फासले पर फील्ड स्ट्रेंथ को कैपिटल E से जाहिर किया गया है। अब क्वेश्चन से गिवन और रिक्वायर्ड डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट चार्ज को हम Q1 से जाहिर करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम, which is equal to 5 into 10 to the power minus 6 coulomb। Second point charge denoted by Q2 and is equal to 10 microcoulomb and is equal to 10 into 10 to the power minus 6 coulomb। दोनों चार्जेस के दरमियान फासला 20 सेंटीमीटर है। इसको हम स्मॉल r से जाहिर करते हैं और 0.2 मीटर्स के बराबर है। कूलम्स कांस्टेंट के 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर है। हमें मालूम करना है पार्ट ए में फोर्स ऑन चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय F12, which means force on charge 1 due to charge 2। In part B, force on charge Q2 is equal to F21, which means force on 2 due to 1। In part C, हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ Q2 से 20 सेंटीमीटर के फासले पर, and electric field strength is denoted by capital E। So let's start solving। To find the force on Q1, we use Coulomb's law। F12 force on charge 1 due to 2 is equal to K Q1 into Q2 divided by R square। Putting values, F12 is equal to 9 multiplied by 10 to the power 9 into 5 multiplied by 10 to the power minus 6, which is the magnitude of charge 1, and 10 multiplied by 10 to the power minus 6 is the magnitude of charge Q2 divided by 0.2 whole square। होल नंबर्स और एक्सपोनेंशियल टर्म्स को अलहदा करेंगे।
F12 is equal to 9 into 5 into 10 into 10 to the power 9, 10 to the power minus 6, and 10 to the power minus 6 again. Divide by 0.04. Now, finding the product in the numerator, we get F12 is equal to 450 multiplied by 10 to the power minus 3 divided by 0.04. Further simplification gives F12 is equal to 11,250 into 10 to the power minus 3. Writing in decimal form, we get F12 is equal to 11.250 Newton. Thus, the force on Q1 due to Q2 is 11.250 Newtons. Now, let's start solving part B. Part B को सॉल्व करने के लिए हम दोबारा कूलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे. F21 force on 2 due to charge 1 is equal to K Q1 into Q2 divided by R square. Putting the values, F21 is equal to 9 into 10 to the power 9, 5 into 10 to the power minus 6 into 10 multiplied by 10 to the power minus 6 divided by 0.2 square. Simplifying step by step is part A, we get F21 is equal to 11.250 Newtons. Thus the force on Q2 due to Q1 is 11.250 Newtons. Coming towards part C, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करना है Q2 से 20 सेंटीमीटर के फासले पर. So electric field strength is equal to F12 force on 1 due to 2 divided by charge 1. 20 सेंटीमीटर के फासले पर Q1 रखा गया है. So Q1 पर Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा? So इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. Electric field strength E is equal to 11.250 newtons divided by magnitude of Q1. So electric field strength is equal to 2.25 into 10 to the power 6 Newton per Coulomb. Writing in prefix, E is equal to 2.25 mega Newton per Coulomb. Thus the required electric field strength at 20 cm from Q2 is 2.25 mega Newton per Coulomb. Dear students, आज हमने सीखा कि चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मिकदार कूलम के कानून से हासिल की जाती है. कूलम का कानून है फोर्स इज इक्वल टू K Q1 into Q2 divided by R square. 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रो कूलम और 10 माइक्रो कूलम न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक एक दूसरे पर बराबर मगर मुखालिफ सिमत में कुव्वतें लगाते हैं. 10 माइक्रो कूलम चार्ज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत 2.25 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम है. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रॉब्लम और इसका हल. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ. अल्लाह हाफिज.